बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू Nexus। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट्स एंड रूल्स के MCQs। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द रजिस्टर ऑफ क्रॉप्स इंस्पेक्शन इज़ कॉल्ड। ऑप्शन ए गर्दवारी, ऑप्शन बी खसरा गिरदवारी, ऑप्शन सी फर्द रफ्तार गिरदवारी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी खसरा गिरदवारी। क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 अ जनरल असेसमेंट शेल बी मेड बाय ऑप्शन ए रेवेन्यू ऑफिसर, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रेवेन्यू ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है चैप्टर 13 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए पार्टीशन, ऑप्शन बी आर्बिट्रेशन, ऑप्शन सी अपील रिव्यू एंड रिवीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अपील रिव्यू एंड रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 who has the authority to review an order passed by themselves or their preceders in office under section 163(1). Option A any revenue officer, option B the board of revenue, option C to commissioner, option D he governor। option A any revenue officer is right option। next question की तरफ चलते हैं a person whom a tenant holds land and to whom the tenant is liable to pay rent for that is called option A landlord, option B landowner, option C both A and B, option D none of these। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन 45 provides restriction on variations of entries in record of rights except when ऑप्शन ए है हमारे पास entries made with facts proved of admitted, ऑप्शन बी entries made with agreement by the parties concerned, ऑप्शन सी entries supported by a decree, ऑप्शन डी all of these। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन 29 states that the arrest of a defaulter shall be made upon option A warrant, option B without warrant, option C both A and B, option D none of these। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वारंट। क्वेश्चन नंबर 8 अंडर सेक्शन 35 if a person required by summons fails to comply with the requisition shall be liable to a fine which may extend to option A 500 rupees, option B 1500 rupees, option C 5000 rupees, option D none of these। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 500 rupees। क्वेश्चन नंबर 9 fee is in respect of any entry shall be payable by the option A the board of revenue, option B person in whose favor the entry is made, option C the district collector, option D none of these। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी person in whose favor the entry is made। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास how is the assessment of estates announced as per section 60 of the land revenue act। option A revenue officer orders the assessment, option B board of revenue orders the assessment, option C board of revenue considers proposal and orders the assessment, option D government prescribe the assessment। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी board of revenue considers proposal and order the assessment। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास according to section 39 record of rights include
डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्स, इसमें ऑप्शन ए है हमारे पास स्टेटमेंट्स शोइंग लैंड ऑनर्स एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट, ऑप्शन बी अ स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स, ऑप्शन सी अ मैप ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, लैंड रेवेन्यू in cash may be assessed as option A in lump sum, option B by installment, option C both A and B, option D none of these। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लैंड रेवेन्यू इन कैश may be assessed as option A in lump sum amount, option B by installments, option C both A and B, option D none of this। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी both A and B। क्वेश्चन नंबर 3, the land which is irrigated from two sources wells and canal is called, option A नहरी, ऑप्शन बी चाही, ऑप्शन सी नुल चाही, ऑप्शन डी है हमारे पास चाही नहरी। तो ऑप्शन डी चाही नहरी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 म्यूटेशन इज लेड डाउन, ऑप्शन ए सेक्शन 40, ऑप्शन बी सेक्शन 42, ऑप्शन सी सेक्शन 43, ऑप्शन डी सेक्शन 44। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेक्शन 42 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समन में डिफाइंड एज, ऑप्शन ए a written notification by a civil court, option B a written notification by a revenue officer, option C a oral notification issued by a revenue officer, option D both A and B, both A and B, option D is right option। next question है which section deal with seals used by a revenue officer, option A section 30, option B section 31, option C section 32, option D section 33। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेक्शन 33। क्वेश्चन नंबर 7, टू whom can an appeal be made when an order is issued by an collector, option A the commissioner, option B the assistant collector, option C the board of revenue, option D none of these, option A the commissioner। Question number 8, according to section 16(1) of the Punjab Land Revenue Act, government may confer on any person all any of the powers of, option A commissioner, option B a collector, option C a assistant collector, option D both A and B। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, the West Pakistan Land Revenue Act was passed on, option A 7th July 1967, option B 17th September 1967, option C 4th November 1967, option D 7th December 1967। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन सी 4th November 1967। क्वेश्चन नंबर 10, मोड्स ऑफ सर्विस of summons are, option A postal and service, option B service by affection, option C। question number 1 है postal and personal service, option B service by affection, option C substituted service, option D all of these। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।